So, good evening, children. This is your fifth poem for class 12, and I'm going to explain it line wise with a reference that is poetic device as well as the new words from this poem. So, let me write the title of the poem Aunt Jennifer Tiger, the name of the poem by Aunt Jennifer Tiger. Aunt Jennifer Tiger written by Adrienne रिच. पोएट का नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये पोएट का नाम भी क्वेश्चन में आते हैं, तो ये इसीलिए मैं हर पोएम में लिख रहा हूँ. ये मोस्टली वो सभी स्टूडेंट जो बहुत बेपरवाह करते हैं. एड्रियानी डबल एन ई Adrienne, Adrienne Rich. This is a poem on women empowerment. How the women are dominated in our society, and this is from America. So, American poet, essayist, and feminist. Feminist means the persons or the society or the groups who work for the upliftment of women. So this is a poem on women empowerment को कैसे ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैसे दे आर डिप्रेस्ड, दे नेवर गेट्स द राइट्स. इवन आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो लास्ट सेंचुरी तक 19% वर्ल्ड कंट्रीज में वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो स्कूल. इस टाइप का कंडीशन था. जस्ट लास्ट सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड में वुमेन्स कॉलेज स्टैब्लिश हुआ. कहाँ पर? रशिया में फर्स्ट वुमेन कॉलेज. तो 19th सेंचुरी में. हाँ, ये 21st सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी का बात करें, ज़्यादा दिन नहीं. और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन कितना पुराना है? 12,000 ईयर्स. ये प्रेजेंट जो सिविलाइजेशन है, प्रेजेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये और जो डेवलपमेंट का सिविलाइजेशन हुआ उससे पहले ह्यूमन का एग्जिस्टेंस तो और पुराना है. तो 12,000 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन हुआ. बट वुमेन्स को एडुकेशन या सोसाइटी में राइट्स का हक जस्ट लास्ट सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. उससे पहले 11,800 ईयर्स तक उन लोगों को कोई वैल्यू नहीं था. तो इसका अगेंस्ट में, एंड वन थिंग्स दिस इज माई बिलीफ इज दैट कि वीमेन्स आर इक्वल, इवन मोर देन इक्वल, नॉट फिजिकली they are weaker than male as created by nature, but in a society based on education and technology, इस सोसाइटी में women are more or equal than man, and I believe it. So for the girls student, it is what you must remember, that you don't think that you are inferior. That is a society that based on physical level or physical world. उसमें physically nature create किया, but brain equal something sharper than man. So a society that based on education and technology, their women are more powerful than man. Many places you can example. So this is what the real scientifically proved things. So I believe it, and I think this is a good personal belief here. So the main theme of this poem is about women empowerment. Good. अमेरिकन पोएट एड्रियन रिच पोएट का ये पोएटिस का नाम भी याद रखेंगे. नाउ लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन. दिस इज अबाउट ए टाइगर दैट आंट जेनिफर विजुअलाइज्ड और इमेजिन्ड टू बी. Tiger is an imaginary creation of Aunt Jennifer, who is oppressed by male-dominated society, and she desire or wish to create a world or live a life like a tiger, free and full of energy, vitality, free, not dominated. She want freedom like a tiger. She want a free life. That is what the desire suggested here. Next, let's start line wise. Aunt Jennifer's tiger prance across his crane. जो एक पिक्चर बनाया गया है, इमेजिनरी पिक्चर, उसमें को कूद रहा है. मे बी हर इट इज इन द बाउंड्री ऑफ हर फेंस इनसाइड हर हाउस, वट एवर मे बी. इट इज prance again a movement. So she want freedom and movement like a tiger. That is what she desire. Again, here contrasted image presented here. What she desire presented through that tiger, and what she is really going through. That is what her present condition.
bright topped denizens. This is description of the tiger. Bright topped denizens, the color of the tiger here suggested. Tapes denizens of a world of green, that is forest. It is a dweller of forest. Forest में रहने वाला inhabitant of forest. They don't fear the man beneath the tree. इस लाइन में इंडिकेट कर रहा है कि जो टाइगर है वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ आदमी से नहीं डरते हैं. Because she herself afraid to be stand equally to a man. Because she is a woman. A woman एक man का equal बराबर होने के लिए डरते हैं. But if this tiger did not afraid to stand against a man. They don't fear the man beneath the tree. They pass in sleek, chivalric certainty. Chivalric, the movement of armies. So they move like a free army, full of power, energy, vitality, free movement. That is how the tiger presented here. So this is what the first stage of the poem, where Aunt Jennifer presents the tiger as in free and energetic movement. Second stanza, Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool. Second stanza suggested what Aunt Jennifer is doing and what her condition. First stanza described about the tiger, that is indirectly or imaginary creation of her wish, desire, unfulfilled desire. That's it want to be. A freedom movement, that is what she wanted. And second stanza, her finger fluttering through her wool. She was stitching, wool को stitch कर रहा है और ऊपर उंगली fluttering, moving, shaking, कांप रहा है. Because she is weak here. Find even the ivory needle hard to pull. Ivory needle, the needle made out of the teeth, elephant's teeth से बना हुआ जो needles होता है जिसमें ऊल बनते हैं, तो उसको इतना हार्ड लग रहा है स्टिच करने के लिए भी. मतलब this is not so hard, but she is really weak. Aunt Jennifer is weak. The massive weight of uncle's wedding band. And what was the reason of that weakness? That is the wedding marriage band. Maybe हर कस्टमर सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज सिंबल भी यूज करते हैं, जैसे बैंगल्स पहनते हैं, जैसे बोरखा लगाते हैं या समथिंग. यहाँ पर वो जो बैंगल्स, तो ये जो हाथ में जो बैंड बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट मैरिज सिंबल. वो उसको इतना वेट, दैट बैंड इज नॉट रियली वाइट, इट इज द रिलेशन that band symbolized. That relation is really white, and that's why she was weak and frail. Sit heavily upon Aunt Jennifer's hand. बहुत टाइटली उसका हाथ को पकड़ के रखे. The heavy weight of the relationship. She was oppressed and distressed by a male-dominated society. Her husband domination that make her really weak, and that is what unable to work a single. That is what to stitch a wool. That is what also difficult for her. This is what the second stanza. Next, in the third stanza, you will find when aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंट का डेथ हो जाएंगे तभी उसका वो टेरिफाइड हैंड्स में वही थिंग्स झूठ में प्रेजेंट करेंगे. कौन सा थी? स्टिल रिंग विथ ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय. वो रिंग तब तक उसके हाथ में रहेंगे मरने को. जैसे इंडियन कस्टम में, हिंदू कस्टम में क्या होता है, आफ्टर डेथ उसके भी वो वर्मिलन जैसे सिंदूर पहना के उसके बाद उसको चीता में चढ़ाते हैं कि मरने के बाद भी उसको प्रूव करना है कि वो समवन्स वाइफ, एंड देन ही सी इज अ ह्यूमन. पहले उसको इंसान नहीं माना जाता, पहले उसको वाइफ माना जाता है. दैट इज व्हाट द सिंबल ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. और आंट जेनिफर का भी यहाँ पर वही सीन दिखाया है कि वो जो रिंग है वो रिंग मरने के बाद भी उसके हाथ में रहेंगे, क्योंकि दैट इज द सिंबल ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing. बट जो टाइगर वो पैनल में इमेजिन से क्रिएट हुआ है वो तब भी कूदते रहेंगे उसमें विदाउट फियर. ए फ्री मूवमेंट जो उसके अंदर, proud and unafraid. And these last two words of the poem, that is what her desire. To be proud, to be unafraid. किसी को नहीं डरना है, proud होके freedom लेके जीना चाहते थे इसे. But in male-dominated society, what made her weak. She even unable to pull the needle to stitch the wools. उतना weak हो गया था. And that is what the symbol of domination again suggested here in the last part of the poem. And this is what again a figure of speech used here is alliteration. P sound repeated here, prancing, proud, P sound repeated. तो alliteration यहाँ पर figure of speech used हुआ है. And I think word भी सब easy था. Topaz, a bright yellow color stone को topaz बोलते हैं, jewelry one type of. And denizen, animal जो tiger था, lives or found in the particular place उसको denizen dweller.
Slick, elegant, chivalric, that is what military man and their ordeal. So prancing move around proudly, fluttering with case of word meaning already I told during the explanation. And if you have any other doubt, you can ask me personally as well. So this is the fifth poem we completed.